Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 12 chapter number 5 law of inheritance and variation, and in this video we discuss about sex determination. So sex determination is a biological system that determines sexual characters of an organism. सो सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन किया जाता है. नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रपोज्ड बाय हैंकिंग इन 1891 एंड ही ऑब्जर्व्ड हिज एक्सपेरिमेंट दैट ट्रेंड्स ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन फेव इंसेक्ट्स. सो हैंकिंग ने इंसेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखा एंड जो कि ओनली 50% ऑफ स्पर्म में प्रेजेंस था. 50% स्पर्म, ओनली प्रेजेंस इन 50% स्पर्म, एंड हैंकिंग कॉल्ड दिस इज एक्स बॉडी. ओके, सो हैंकिंग ऑब्जर्व्ड specific nuclear structure in his experiment and in fave insect and located only 50% sperm, and he is called this is X body. And later sometime he observed that sperm with X body fuse ovum produce male, and without X body, sperm without X body fuse ovum produce female. Okay, so this X body called sex chromosomes. So X body में कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व किया गया कि जिस स्पर्म में एक्स बॉडी होता है उसका फ्यूज़न अगर ओवम के साथ किया जाता है तो मेल प्रोड्यूस होता है, एंड जब विदाउट एक्स बॉडी स्पर्म का फ्यूज़न ओवम के साथ होता है तो फीमेल प्रोड्यूस होता है. एंड दिस टाइम एक्स बॉडी कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स. एग्जाम्पल्स इन ड्रोसोफिला. In Drosophila, XX and XO chromosomes presence, XX in female and XO in male. So ड्रोसोफिला में मेल में 50% चांसेस X क्रोमोसोम्स का होगा एंड 50% चांसेस O क्रोमोसोम्स होगा. सो दिस टेक्निक ऑफ डिटर्मिनेशन इज नोन एज मेल हेट्रोगैमेट्स, एंड इन बर्ड्स ZZ and ZW. So ZW represent in female and ZZ represent male. So birds में फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स Z and W है. सो यहाँ पे 50% चांसेस होता है, 50% Z and 50% this determined technique female heterogamity. And in human beings next, so in human beings 23 pair of chromosomes presence, 22 pair is autosomes and 1 pair is sex chromosomes. So in human beings XX chromosomes carried by female and XY chromosomes carried by male. So in the time of gametogenesis, male carry 50% X chromosomes and 50% Y chromosomes, XY male. So XX, XY, XX and XY. सो यहाँ पे 50% चांसेस होगा, 50% चांसेस टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल, 50% चांसेस टू प्रोड्यूस फीमेल चाइल्ड एंड 50% चांसेस टू प्रोड्यूस मेल चाइल्ड. ओके, सो नेक्स्ट, sex determination is a biological system that determines sexual characters of an organism, and in Hankang proposed Hankang in 1891, and he's observed his experiment in insect specific nuclear structure located in only 50% sperm, and this is called X body. And later sometime he observed a sperm with X body fused with ovum, this is produced male, and
sperm without X body fusion ovum produce female offspring. So this is no. So in this time X body called sex chromosomes, example in Drosophila, so XX carried by female and XO chromosomes carried by male, and in birds ZZ chromosomes carried by male and ZW chromosomes carried by female. Human beings 23 pair of chromosomes presence, 22 pair of chromosomes is called autosomes, and 1 pair chromosomes it's called sex chromosomes. So XX carried by female and XY carried by male. So in gametogenesis chances 50% chances to carry male X chromosomes and 50% chances to carry Y chromosomes. So cross between male and female, parent body and gametes XX XY, and offspring 50% chances होता है to produce male offspring and 50% chances to produce female offspring. So this is completed sex determination. I hope you understood very well, and if any queries or doubt you can comment below, or also you can contact us. Thank you.